Assalamu alaikum. Today we are going to start with lecture number 18, and in lecture number 17, let me just give you a recap. What we have studied was conflict management and why conflicts occur in natural resource management, what are their reasons, and how we can get rid of these conflicts over here. And before getting into conflicts, I told you that where we are talking about human geography and other disciplines, there's a new thing that has emerged over the past few years, and we call it as chance. Chance is basically coupled human and natural systems. It's a little bit more detailed, and we did talked about that what kind of chance are there, and later on we talked about conflict and international natural resource management, that why conflicts occur, what are the reasons, and how we can remove these conflicts. And later on there's another strategy of removing conflicts, that was co-management. So this was basically what we have been talking about so far in these 17 lectures, and hopefully this is in the mid of the course. You may have by now, I presume, or I understand that you have understood that what the course is about, and we are not just going to talk about planning or policy, but there are quite a number of things that we have to cover in natural resource management and planning, and this is what is being taught around the world. So the way I formulated this course, it was basically that we are a kind of semi all-rounder when we are talking with policymakers, when we're talking with economists, when we are talking with sociologists, when we're talking with environmentalists. So we know quite much about of everything. Now today's topic is very interesting, and presumably people who are economists, they will enjoy it, they would love it, but those who are not economists, they might feel a little bored. So for that, for those people who might get bored, I have brought a little video. For the first time, I'm going to show you a video in this course, and that is also one of our very good friends, Pawan Sukhdev's talk. It's like 10 to 15 minutes talk, but he gave a very interesting practical overview, whatever I'm going to talk about in theory. So today I'm going to discuss a very important concept, and we call it as payments for ecosystem services, PES. And this concept emerged for the past, I think in 1990s, the concept got into old, and now all the hardcore economists, who have moved towards environment, they are looking into it. Now why I included this topic, I know that usually when we are talking about this planning course in public administration, professors don't just discuss about it. But again, I'm not going to make you as economists, but believe me that these concepts, what I'm going to teach you today, they are going to help you in the long run. And why? Because this is what people are working on nowadays, and this is how decisions are being taking place. Over here, let's talk about that. When we say that what are ecosystem services and payments, this is the things that we are going to cover over here. Now that covers defining ecosystem and ecosystem services. If you remember lecture 3 or lecture 4, I have already covered that, but so I will be just rushing from that. I won't be going in detail because we did a detailed lecture on it. Then ecosystem services and the economy, how ecosystem services and economy are interrelated, then what are the drivers of today's challenge. Uske baad we are going to talk about evolving environmental expectations and definition of payments for ecosystem services, and फिर first module we will finish about that why payments for ecosystem services. So this is the part 1, in which either you are an economist, either you are whatever discipline you are working in, यहाँ पे हम सारे आके बराबर हो जाएंगे after learning these concepts. So let's talk about what is ecosystem and ecosystem services. Well, ecosystem
as we already know, that it is a combined interaction of biological, that is living, plants aage, animals aage, microorganisms aage, communities, components of environment, biological, and और उसके साथ किसका combination आ जाता है, the physical. एक living और एक non-living components, और non-living components, air, water, soil, and the basic elements and compounds of the environment. जब in human और nature का जब environment के का interaction हो जाता है, we start calling it as the ecosystem. So it's basically biological and physical interaction. Now if you look in the diagram, it's a beautiful picture, and what I'm trying to say that ecosystem services में, in services में हमें कौन-कौन सी services मिलती हैं, and some of them are air quality. Air, when you are breathing clean air, that is a service that is being provided by your ecosystem. It is an irony that now we pay to these restaurants to breathe fresh air. ये भी एक ज़माना आना था. I used to make fun of my friends who were working with the environment department once upon a time, that water, which is a gift of nature, जिसको हमने इतना pollute कर दिया है that now we have to drink. If we want to drink clean water, we go for these bottled mineral waters. But there are people who are still drinking from the streams. I myself, when I was in Switzerland and I was in the mountains, I used to drink out of the open streams. Nothing happened. But man has polluted the nature so much that now we are making efforts. We need mineral water. We need to go to these restaurants like O2 where we pay to breathe fresh air. Interesting. So then we have these wild species and habitat protection. इसके अंदर wild species, they are part of the ecosystem. Then you have carbon sequestration and storage. आपके जो forests, and they act like the carbon sequestration storage, because these forests, they are the biggest hub for carbon dioxide, because they take in carbon dioxide and give out carbon dioxide. Then soil formation, fertility, watershed protection and regulations. Then plants, pollination. Pollination is very interesting. Why pollination is important? Because इससे आपके जो plants होते हैं उनकी growth होती है, and pollination एक self pollination होती है, cross pollination होती है, and sometimes these honey bees, these are one of these bees, insects, they are the carriers of these pollination, and अगर ये pollination ना हो, believe me, your ecosystem is going to fade out. And in this way, these are all the services that we are getting from the ecosystem. Next, 1990s में he used to be my professor's friend, and the name is Robert Costanza. Nowadays he is with the University of Portland, I believe. I may be wrong, but he is a big celebrity in economics and in ecological economics. You can always Google him. That is Robert Costanza. But I know him when he was in University of Vermont at School of Rubenstein School में होता था, and he published one paper in 1990s, and it is the heavily critiqued paper. Just like when we were going to talk about climate change, then Nicholas Stern का मैं जब जिक्र करूँगा, उसी तरह ये है हमारे this guy Robert Costanza. Robert Costanza ने क्या किया? In 1990s, some ecologists, some environmental economists, they got together and they formed a group, and what their objective was that they started giving value, which was earlier absent. They started giving value to the environment, and when they started giving value, जो total nature की जो value आई, ठीक है, जो nature हमें services provide करती है, what we can call it as the ecosystem services, that came out to be 33 trillion per year. Now, ladies and gentlemen, my dear students, now the number games start. Nature हमें एक साल में, what he calculated, $33 trillion का फायदा देती है. After that, what happened? It was a complete stir up. Every person started critiquing it, क्योंकि 33 trillion का जो figure था, that was twice as big as our gross national product of the world. जो GNP है आपकी दुनिया का 1997 का, that is 18 trillion, and जो nature आपको फायदा दे रही है, that is
33 trillion, and it was a global buzz and everyone started talking about it. You can imagine that we are getting nature's services per year in 1997 up to zyada hogi, and that was 33 trillion. It's a very famous paper, and you can download it from the web and you can read it. It's not a very big itna bada paper, meaning it's a short paper and you can enjoy the reading. I loved it. That was my first paper when I studied this ecological economics. Ab aa jata hai Herman Daly. Remember that environmental economics se aage ek aur field aa jata, that is ecological economics. I am also one of the disciples of this group, and यहाँ पे आपका Robert Costanza आता है, John Gowdy आता है, and the third one is your Herman Daly. Now these guys started talking about ecological economics and started giving value, because they were hardcore economists, or economists ने monetize किया environmental services को, and from there they started monetizing the environment. And what they did was that they defined Herman Daly, jo ke he is a professor emeritus at University of Maryland, and what he did was that he defined ecosystem services. What is his definition? It came under widespread use in ensuring dialogue after the 1997 ki jo publication hui, and what it refers was that it refers to a wide range of conditions and processes through which natural ecosystems and the species that are part of them help sustain and fulfill human life. Ecosystem services के जो services हमें nature से मिल रही हैं वो क्या कर रहे हैं, human life को sustain कर रहे हैं और उसकी fulfill कर रहे हैं जो उसकी needs हैं. So Herman Daly ने ये definition दी in 1997. अब क्या हुआ that जो nature करती है, there are 4 kinds of services जो कि हम ecosystem से लेते हैं. Number 1 is your environmental goods. Environmental goods में हमारा क्या आ जाता है, food, fresh water, fuel, fiber. Then we have regulating services. Environmental services. Number 2 is my regulating services. Regulating services में जो regulations आपके होते हैं. What are the regulations? Like climate regulation, flood regulation, water filtration. ये हमारे regulation services हैं. Third हमारी क्या आ जाती है, supporting services आ जाती है. Supporting services में क्या होता है, nutrient cycling, your soil formation. These are examples. There are much more towards that. And then you have the cultural services from the ecosystem, that is your aesthetic, spiritual, educational, recreational. These are all my cultural services. अगर आप पहले 3 को मिला लें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट इनपुट्स हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा बिजनेसेस के लिए ऑपरेशंस में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, एंड देन एक हेल्दी वर्कर के लिए ये आपका इस्तेमाल होता है. ये जो पहली 3 सर्विस हैं, फंडामेंटल्स लाइक क्लीन एयर, एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ वाटर, फूड, and contribution to license to operate. Basically, some services are, all these services are necessary, and in one way or the other way we are utilizing these services from the nature. We are acquiring them. Now the question comes, okay, what are the challenges? Why are we looking into them? Why are these services so important? जबकि हम शुरू से हम nature से services use कर रहे थे. The issues is that what are the drivers of today's challenges? Number 1, we do not have a perfect conceptual framework or data जिसके ऊपर आप बता सको. Can you tell me कि for example government ने I believe in 1990s के अंदर we started going for CNG, and now it's 2014, it's a huge shortage. Can be forecasted कि जी और कितने साल चलेगी या कब तक होगी, because we lack of conceptual frameworks and data. Then we do not have clear distinction or clarity on property rights. Okay, who owns this particular part of nature? Who owns the sky? Who owns the water? Who owns the mountains? We do not have these clear property rights. और यही आपको conflict की तरफ भी लेके जाते हैं. Then if we talk about investments, ठीक है ना, we have investing in nature
What is our incentive? We lack the investment incentives. ठीक है. उसके बाद what are the perceptions of public sector responsibility for maintenance? Every person thinks या जो private या जो public की जो perception है कि जी government का जो role है in terms of maintaining the natural resources, that is very different. ठीक है ना. अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रही होती थी, we would not have been studying 2 modules of community based natural resource management. We would not have been talking about conflict, because if government regulations were too good and the government was taking care of the environment. Then what are the promotion of activities that undercut environmental services? कि जी इन environmental services को हम promote कैसे कर सकते हैं? And then invisibility of effects as impacts as dispersed over time and geographies. एक और बड़ा चैलेंज ये है कि पोल्यूशन करता है इंडिया, बट पाकिस्तानी पीपल हैव टू अफोर्ड फॉर दैट, हैव टू पे फॉर दैट पोल्यूशन. लाइक हडियारा ड्रेन की एक बड़ी फेमस केस स्टडी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. इफ यू गेट अ चांस डू रीड अबाउट इट. कि जी सारा पोल्यूटेड वाटर पाकिस्तान के अंदर आ जाता है एंड आवर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द हेल्थ इश्यूज फ्रॉम दैट. सो देयरफॉर आपकी जो इनविजिबिलिटी है कि पोल्यूशन सारी यूएस से करता है एंड पाकिस्तान आल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज. सो सच जो इश्यूज हैं इनके ऊपर वी नीड टू सी, बिकॉज दे आर इनविजिबल. वी डोंट नो कि हु इज पोल्यूटिंग एंड हु इज बिकमिंग अफेक्टेड बाय दैट. सो दीज आर some of the challenges today that we face as policymakers, as environmentalists or as environmental economists. अब क्या हुआ कि हमारी जो environmental expectations थी वो कैसे evolve हुई. Number 1, recognition of environmental protection policy failures. कि जी हमारे यहाँ पे policy failures हुए हैं. Why? Because declining function of environmental services. कि आपकी जो environmental services जो कि शुरू में taking it from the nature, now they have declined 60% उनके अंदर decline आ गया है. Then increasing demand for access to environmental services. But अब प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है नेचर के ऊपर. वी आर टेकिंग मोर फ्रॉम द नेचर. वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज. देन वी हैव ग्रोइंग लाइसेंस टू ऑपरेट चैलेंजेस. ठीक है. एंड ह्यूमन हेल्थ लिंकेजेस टू एनवायरमेंटल क्वालिटी. और जैसे जैसे एनवायरमेंटल क्वालिटी खराब होती जा रही है, आपकी ह्यूमन हेल्थ वर्स होती जा रही है. सो ह्यूमंस और एनवायरमेंटल क्वालिटी का भी आपस में, ह्यूमन हेल्थ का, देयर इज अ क्वाइट डीप रिलेशनशिप बिटवीन द टू. इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए. फॉर एग्जांपल इन यूएस व्हाट दे डिड वाज दैट दे स्टार्टेड एसिड रेन रिलेटेड एयर पोल्यूटेंट्स. इन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने फिशरीज के साथ रिसर्च की. उसके बाद वाइल्ड लाइफ हंटिंग, अफ्रीका के अंदर डिफरेंट तरीकों से उन्होंने हंटिंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए, लाइक इन पाकिस्तान वी प्रैक्टिस दिस ट्रॉफी हंटिंग कि जी आप सारा साल हंट ना करें, एक दिन कर लें एंड वी विल गिव यू द ट्रॉफी. सो दैट ट्रॉफी हंटिंग इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. एंड देन वेस्ट कोटास. यूरोप के अंदर वेस्ट कोटास practically they are being worked out. So these are some of the testing of these alternatives जो हमारे environmental policy failures हो रहे थे. Now जहाँ पे गवर्नमेंट के फेलियर्स आ जाते हैं, ऑन द अदर साइड वी टॉक अबाउट दैट देयर आर फेलियर्स फ्रॉम द private sector also, and we call them as the market-based solutions. Market-based solutions के अंदर what we are talking about is that there is an emerging focus on the potential for market mechanisms designed to, number 1, capture value, number 2 is discovering the prices, and number 3 is establishing the trading platforms. अब कैप्चर वैल्यू के अंदर क्या हमने करना होता है, दैट वी आर ट्राइंग टू गेट द, और वी आर ट्राइंग टू मोनेटाइज द वैल्यूज ऑफ दीज एनवायरमेंटल सर्विसेज. द रीजन इज दैट वी डोंट नो दैट व्हाट एनवायरमेंट इज, व्हाट वी आर टेकिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट. और जब आप किसी चीज को फ्री ले रहे होते हो, हम उसकी वैल्यू एज सच नहीं करते. इकोनॉमिस्ट्स को मैं ये कहता हूँ, देयर मेजर कंट्रीब्यूशन हैज बीन दैट दे हैव एक्चुअली started giving monetary value. उन्होंने एक प्राइस टैग लगा दिया एनवायरनमेंट के ऊपर, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट ओके लेट्स गिव वैल्यू. जब तक पानी आपके टैप में फ्री आ रहा होता है, यस I shave with the open tap क्योंकि I'm not paying any bills. But the moment you start paying bill, obviously you become very cautious about it. So similarly, economists ने क्या किया, that okay, let's put a price tag on the environment. Let's have some trading platforms. अब payment for ecosystem services. How do we define it? Payment for ecosystem services क्या है? It is a scheme. अब इस स्कीम के अंदर हम क्या करते हैं, what we are doing is, number 1, it is a voluntarily
transaction. ठीक है, पहला बात आपने हमेशा याद रखनी है that it is a voluntarily transaction. This one, let me just underline that for you. Yep, it's a voluntary transaction. Number 2, it's a well-defined environmental service or a form of land use likely to secure that service. ठीक है, सबसे पहले it is volunteer. Number 2, it is well-defined. Number 3, it is bought by at least one environmental service, ecosystem service buyer, यानी आपका एक buyer होना चाहिए. उसके बाद there has to be a provider, seller is the same provider, and if only if provider continues to supply the service, then there is a conditionality. So ecosystem service में क्या है, it's a kind of transaction which is being volunteer, it is well defined. I am the buyer, you are the seller. आपसे मैं सर्विस लेता हूँ और मैं आपको उसकी पेमेंट करता हूँ, और ये एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म होना चाहिए. अब उसके अंदर अगर मैं पेमेंट नहीं करता, then I am just working on free. I am not giving anything. Now this is the question that usually when I am teaching this, एक question सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि जी sir, now tell us why payments for ecosystem services. ठीक है, PES, why? And number 1, my reason is that nature provides services free of charge. कभी आपने नहीं देखा कि आपने ऑक्सीजन ली हो and मदर नेचर कम्स एंड टेल यू, गिव्स यू अ बिल कि जी आपने इस महीने इतनी आपने ऑक्सीजन आपने इनहेल किए, तो काइंडली गिव मी द बिल फॉर दैट. शी इज़ वेरी जेनरस. आप पानी यूज़ करते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट वासा और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी, बट इफ़ यू आर हैविंग वाटर फ्रॉम द ओपन स्ट्रीम्स, तो कभी माउंटेन्स आपके पास आए हो दैट ओके काइंडली गिव अस द payment, kindly pay us the amount of money that the amount of water that you have drank from here. So therefore nature क्या करती है, nature is providing you all the services free of cost, free of charge. अब consumption of ecosystem goods, ये जो हम consumption करते हैं, it is favored. Human behavior यही है that we prefer कि जी मैं इस चीज़ को बचाऊं या मैं इस चीज़ को खा जाऊं. I prefer consumption over conservation. Second reason ये है क्यों I am going for PES, payment for ecosystem services, because we are consumption oriented societies and we prefer consumption over conservation. Number 3, market forces must be realigned to invest in production of both ecosystem goods and services. Market forces को अगर हमने देखा तो market forces, the market, the way it behaved, market की मैंने आपको definition बताई थी, it was a place where buyers and sellers meet, exchange takes place at a certain price level. But over here, when we are talking about markets, the issue is that markets take environment as an externality. It's free of cost. Markets में आप कोई भी product ले लें, if you buy your shampoo, if you buy your clothes or anything, कहीं पे लिखा होता है कि जी आपने एनवायरनमेंट को इतना डैमेज पहुंचाया है, सो उसका हम आपको यू हैव टू पे योर बिल फॉर दैट. नो, वी डोंट डू दैट. सो देयरफॉर मार्केट्स नीड्स टू बी इनकोऑपरेटेड. सो मार्केट्स के अंदर नेचर का जो एलिमेंट है एनवायरमेंटल सर्विसेज का, उसको इंक्लूड करना लाजमी है. नंबर 4, इफ मार्केट फोर्सेस रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स इन इकोसिस्टम सर्विसेज. ठीक है, अगर मार्केट फोर्सेस रिवॉर्ड करती हैं इकोसिस्टम सर्विसेज को, अ पॉजिटिव फीडबैक लूप विल स्टार्ट. यानी अगर आपको इंसेंटिव मिलेगा, इफ़ यू रिमेंबर जब हम लोकल लेवल पे पढ़ रहे थे कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, तो कम्युनिटी लेवल पे कम्युनिटीज आर नॉट, हाँ दे डू इन कंजर्व, क्या कहते हैं, वॉलंटरली, बट द इशू इज दैट देयर नीड्स टू बी सम इंसेंटिव. ठीक है ना, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम इंसेंटिव ऑन दैट प्रोटेक्शन, दे आर नॉट गोइंग टू कंजर्व द एनवायरनमेंट. सो मार्केट में अगर आपको इफ मार्केट प्रोवाइड सम पॉजिटिव फीडबैक, सम पॉजिटिव इंसेंटिव फॉर कंजर्वेशन, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इकोसिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, बिकॉज पीपल नो दे आर नॉट डूइंग इट फॉर फ्री, दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. Now this fuels sustainable economic growth and ecological restoration. अब again, जब हम पैसा नेचर को देते हैं, इट्स नॉट कि नेचर ने खाना तो नहीं खा लेना, नहीं, नेचर इज नॉट गोइंग टू पुट दैट इन मनी, पुट दैट मनी इन बैंक कि मुझे उस पर सेविंग रेट्स मिलेंगे, बट द इशू इज कि वो वापस नेचर पे ही पैसे लगेंगे एंड देयर विल बी गोइंग टू बी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन. सो बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ PES, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज a really good concept,
It's an evolving concept, and if you really want to pursue your research with reference to Pakistan, very less work has been done in payment for ecosystem services. Why it is crucial for planners? Because we don't know the value of these resources. और अगर आपको इनकी resources की value ही नहीं पता, how you are going to put them in plan, how you are going to say, well, save this particular service, save this particular natural good because this values is very high. Now if you see ये जो wildlife की जो campaigns चलती हैं कि जी मारखोर, wild snow leopard, blind dolphin, तो they try to monetize it. They try to monetize it in a way that we know, we understand its value. If I give you a watch for 10 rupees and later on I say, well, this they take this second watch, this is worth 1 million. Which one, किसका आप ज़्यादा ख्याल रखोगे? 1 million वाली का या 10 रुपए वाली का? You will obviously take the 1 million one. But both watches का watch का जो objective है वो क्या है? Time बताना. It's not that okay 1 million वाली watch is something out of the world, but yes, it is serving the same purpose which the other one is doing. Either you keep a smartphone, either you keep an Apple phone, or you do keep Q mobile. Both का purpose का same है, but value हमने उसको एक price दे दिया, एक price tag दे दिया, एक हमने उसके साथ value attach कर दी by which you start feeling yourself as an important, that I'm an Apple user, I'm a Samsung user, I drive Mercedes, I drive BMW. Why? Because you have attached a value. Now throughout this phase, that while we were using the nature was the ignored one because we were not putting price to it. And now from where I said कि हम सारे बराबर हो जाएंगे, because now the base is that nature provides free of charge. The base is here, and now the job of an economist is, it doesn't matter that if you are not an economist, if you don't know how to measure the value, how to assign a monetary value, because there are a lot of people who are there. If you are in the policy process, hire them, tell them that okay, what is the economic value of that particular asset. If you remember in the previous lectures, I also talked about the cost benefit analysis, जब हम different types of management procedures पढ़ रहे थे कि कौन सा बेहतर है in terms of natural resource management. So उसके अंदर मैं वो cost benefit analysis use that. Again, as an arts student, as a science student, we may be unable to do it, but if you're an economist, you can easily play with the numbers and you can get hold of those things. So therefore, over here we develop this consensus that जहाँ पे Robert Costanza ने कहा था कि it's 33 trillion per year, we must accept it that we have been ignoring this particular value. We have been ignoring nature, that इसकी भी कोई economic value है. The moment you put a price tag on it, then you start realizing its importance, और automatically आपकी जो nature है या आपका जो ecosystem है उसमें balancing होने लग पड़ती है. You start balancing your ecological restoration आपका start हो जाता है. Now, little bit of basics. Introduction to the payments for environmental services. Even if you look at it, you can see the abbreviation that is being used, that is going to be PES. और इसके अंदर हम बात करते हैं that I'll be taking two case studies. One is for water and another one is for climate change. So water के हवाले से I'll give you an example, and now we will, after making the base that why we are valuing the nature, why do we need it, now we start what exactly is PES. So our lecture will continue with this, that what are the payments for ecosystem environmental services या ecosystem services, you can call it in both ways. Theory क्या है उसके पीछे, फिर theory से practice में, when I'm telling you that okay these things are happening, क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, we will look into the examples because that's happening at the moment. And from theory to practice, we will identify and value the environmental services, then we will develop the PES mechanisms, then how to charge the service users, which is people who are using the services, how to pay the service providers, जो लोग provide कर रहे हैं. यानी the first A is my buyers and B is my sellers, and the third one is
establishing an institutional framework. You need a proper institutional framework when we are talking about payment for ecosystem services. Okay, now number one, payment for environmental services. इसमें क्या होता है, मैंने कहा था I'll take an example of water. You are looking at that there is one light green and the darker blue. अब वाटर आ रहा है फ्रॉम अपर स्ट्रीम से लोअर स्ट्रीम, ऊपर से नीचे पानी आ रहा है. सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या हैं, जो सप्लाई की जा रही है सर्विसेज, उसमें क्या दिया जा रहा है, अप स्ट्रीम लैंड यूजर्स. ठीक है, अगर ये अप स्ट्रीम में, अगर आप यहाँ पे ऑन दिस पार्ट, what I'm doing is, if you do something, though it will affect the quantity, the quality and timings of water flow. किन के लिए, downstream वालों के लिए. I told you in the northern areas, अगर upper stream में कोई लोग बैठे हुए हैं and they start cleaning, they do all the cattle उनके पास है, तो सारा कुछ वो गंद अगर पानी में डाल देते हैं, जो लोग downstream में हैं, they get affected by it. ठीक है, so water की जो service है वो upstream से downstream आती है. And फर्स्ट वी क्लियर के सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है कि इट अफेक्ट्स, कि जैसा जैसा आप अपने डिफरेंट लैंड यूज को करेंगे. अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर आपका लगा देते हैं, तो व्हाट हैपेंस दैट पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग वाटर ओवर हियर, और डाउनस्ट्रीम पे वाटर कम हो जाएगा. अगर यहाँ पे आपके पास ज़्यादा सारी कैटल आ जाती है, तो व्हाट हैपेंस दैट सारा जो कैटल का गंद वगैरह है वो पानी में डालेंगे एंड इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम. उसके बाद अगर आप यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे वाटर का यूजेज ज़्यादा होता है, डाउनस्ट्रीम वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर दीज आर a very simple example in terms of water, that how things are going to be affected by that. Number 2, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि डिमांड फॉर सर्विसेज. व्हाट आर द डिमांड फॉर सर्विसेज? अब डिमांड फॉर सर्विसेज में what we are going to see is there is possible downstream beneficiaries, people who are living below. ये जो dark blue वाले में हैं, इनके कुछ benefits हैं. What are those benefits? Number 1, domestic water use. ऊपर से पानी आता, they are using water as domestic use. Number 2, irrigated agriculture. नीचे भी तो farms हैं, they are using it for the farming purposes, for irrigation purposes. फिर water जो downstream है, वहाँ पे fish भी साथ लेके आता है, so the people living downstream they enjoy the fish because of this water. Then recreation का एक concept आ गया. ठीक है, उसके बाद downstream ecosystem, जो नीचे जो ecosystem है, बाकी जो biological है, wild life है, fish है, marine life है, ये सारी क्या हैं, इस water की वजह से they are surviving. ठीक है, so that is all about the demand for services. What we say as कि जी आपकी वाटर की जो सर्विसेज हैं, they are very important, और ये डिमांड कर रहे हैं. अगर वाटर आना बंद हो जाए, so ये जितनी भी आपकी डिमांड फॉर सर्विसेज हैं, they are going to be closed. Now प्रॉब्लम क्या है? Be very clear about this, क्योंकि अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, then there are no issues. You are half done economist. You can easily understand the mechanism, what is happening. और जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी okay, this is PES and this kind of value we are going to give, then you will understand that okay, what exactly we are talking about. So now the problem, benefits to the land user. दो आप देख रहे हैं, एक फॉरेस्ट है. अब अगर तो हम उस फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, तो जो आपको बेनिफिट उससे आता है वो आपको लाइट ग्रीन में जो नजर आ रहा है, दैट इज योर बेनिफिट. अगर आप उस फॉरेस्ट को क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन उसकी करते हैं, यानी दरख्त काटते हैं, एंड यूज इट फॉर पास्चर, और आपने उसकी पास्चर के लिए यूज कर लिया. सो नाउ व्हाट हैपेंस, इसमें आप क्या करें, जब उसके पास्चर के लिए यूज करेंगे, डिफॉरेस्टेशन हम करेंगे, तो आप कुछ कॉस्ट्स आप पे करोगे. व्हाट आर दोज कॉस्ट्स? कॉस्ट किनको पे करनी पड़ेंगी, डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशन को, क्योंकि अर्लियर दे वर गेटिंग द वाटर एंड एवरीथिंग, बट नाउ दे आर नॉट गोइंग टू गेट दैट. अब क्या होगा, ड्यू टू दिस, अगर आप वहां पे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अब इसको बचाने के लिए क्या हमने किया है पिछले, what were the policy tools for that? Number 1 was direct government intervention. कि जी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंटरवीन किया. गवर्नमेंट ने कहा जी डू नॉट कट द फॉरेस्ट and you cannot convert it into green pastures. Demonstration approaches हुई. आपको मैंने ट्री हगर्स की बताई थी कि जी खवातीन ने जी
trees को हक कर लिया, and in this way, so that is more of a action, civil action, and people get together for a cause and they do it. That is a second approach. यहाँ government कर दे कुछ, ठीक है, उस वाले एरिया को डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए, यहाँ आप क्या कर लो, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच आ जाए. नंबर 3, रेगुलेटरी अप्रोचेस, कि आपने कोई टैक्स लगा दिया, आपने कोई सिस्टम उसके ऊपर डेवलप कर दिया, और यहाँ आपने कोई सब्सिडी दे दी, ठीक है, आपने कोई इंसेंटिव दे दिया कि जी आई सब्सिडाइज यू अगर आप इन दरख्तों को ना काटने. अब इन 3 पॉलिसीज का फेलियर बहुत ज्यादा हायर रहा है. अगर ये सक्सेसफुल रहती तो वी वुड हैव अ लॉट ऑफ नेचुरल गुड्स, बट इनका जो सक्सेस रेशियो दैट हैज बीन वेरी लो. अब इसका क्या रहा है, व्हाट हैज बीन द रिजल्ट्स के इनके अडॉप्शन रेट्स क्या रहे, दे वर वेरी लो, एंड अडॉप्शन फॉलोड बाय अबैंडनमेंट. बाद में इस प्रोजेक्ट को सारों ने छोड़ दिया, नो वन इवन केयर्ड अबाउट इट. अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ PES सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम, ठीक है. अब PES सॉल्व क्या करता है कि जनाब अगर तो हम उसका डिफॉरेस्टेशन करते हैं या जब हम उसके पास्चर्स में करते हैं, सो लैंड यूजर्स को बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे वर द लैंड यूजर्स. अब लैंड यूजर्स 2 कर सकते हैं, आइदर उसको डिफॉरेस्टेशन कर दें या उसका फॉर पास्चर. अब उसके फायदे बहुत हैं, लेकिन अगर दूसरी चॉइस ये है कि कुछ भी ना करें, वो उसको कंजर्व करें. लेकिन अगर आप कंजर्वेशन की बेनिफिट देखते हो, दे आर मच लोअर एज कम्पेयर टू डिफॉरेस्टेशन, अगर उनके पास वो वाली ऑप्शन है. नाउ व्हाट दे डू इज, अगर वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जो डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशंस हैं उन पे ये वाली कॉस्ट्स पड़ती हैं. दीज आर द कॉस्ट्स टू द डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन, क्योंकि इकोसिस्टम पे तो सारे डिपेंड करते हैं. नाउ व्हाट वी डू, इंटरेस्टिंग, हम कहते हैं कि ये जो आप कॉस्ट्स, ये जो आप डैमेज कर रहे हैं, ये जो कॉस्ट्स हो रही हैं, ये किनको की जाए, पेमेंट की जाए. कंजर्वेशन विद पेमेंट फॉर सर्विस, जो आप सर्विसेज आप इनसे लेंगे नेचर से, ठीक है, इनकी आप पेमेंट करें. और किनको पेमेंट करें, हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, ठीक है. हमने नेचर को डैमेज तो किया to acquire some services. Now PES in a nutshell is that when we are acquiring these services, we are actually saying that we have to pay for these services. Earlier we were just doing it for free. Now what we do is कि अगर हम किसी नेचर एसेट को यूज करते हैं जो कि हमें ऊपर वाले लोग हमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, so what we do is while we are acquiring these services we make payment for it. Now it is not for free. And this logic is repeated every year. हर साल आप ये कर रहे हो. If you remember the definition I said, it is sustainable, it is long term. It's not कि मैंने सिर्फ 6 महीने किया and then that finishes out. No, it is going to be a long run thing. Next, you need annual payments and need sustained financing, because अब जो बाकी आप काम कर रहे हो, यू आर एक्चुअली कंजर्विंग द फॉरेस्ट, ठीक है. सारा फॉरेस्ट नहीं आपने किया, आपने जो बाकी कुछ फॉरेस्ट बचा आप उसको कंजर्व करने के लिए नाउ यू नीड सम फाइनेंस फॉर दैट. सो इन दिस वे योर पेमेंट्स फॉर एनवायरमेंटल सर्विसेज वर्क आउट. अब 2 हैं मेजर प्रिंसिपल्स PES के. नंबर 1, those who provide environmental services get paid doing so. जो आपको environmental services प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या दी जाती है, पेमेंट दी जाती है. दे आर प्रोवाइडर गेट्स. Those who benefit from environmental services pay for their provision and user pays. There's one buyer, one seller. So जो provider gets और user pays. पहला वाला seller है because he is providing these natural resource services, और जो second वाला है he is the customer, he is the user. तो user क्या कर रहा है when he is getting these environmental services, तो वो पे करेगा, और जो प्रोवाइडर है वो जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो क्या करेगा, he will be getting the money out of it. Now the same condition कि he is not going to get the money for just one instant. It is annual, it is long term financing, क्योंकि अगर उसको ये पैसे मिलते रहेंगे, now he will invest the same money in the conservation of forest. तो आपकी क्या हो जाएगी, ecological restoration हो रही है. Now let's see,
हमने ये अब हमने थोड़ा सा और पिक्चर चेंज किया। यहाँ पे हमारे क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, दीज आर माई प्रोटेक्टेड एरियाज, दीज आर माई प्राइवेट लैंड्स, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज डेजिग्नेटेड एरिया बाय द गवर्नमेंट के जी आप इनको हाथ नहीं लगा सकते। ये मेरे यूजर्स हैं। अगर ये मेरे यूजर्स हैं तो ये कौन है, ये मेरे प्रोवाइडर्स हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, users payments can go to number one private landowners, क्योंकि private landowners उनको services provide कर रहे हैं including buffer zones and biological corridors. Number two, यहाँ ये वाली payments कहाँ पे जाएंगी, protected area में, protected area budget में for the ecological restoration. So this is how it works, like you get all the information, ठीक है, and you get all the monetization things, और जो जो आपको सर्विसेज नेचर से मिल रही होती हैं आप उनको मोनेटाइज करके you just get it back to the nature. In this way this mechanism is going to work. Next, what make payments for environmental services attractive? क्यों हम PES की बात करते हैं, why it is so good? Let's see. Number one, it is efficient. पहला जो हम इसका पॉइंट बताते हैं कि क्यों हम इसको PES को फेवर करते हैं, बिकॉज इट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट इन अ सेंस कि इट कंजर्व्स व्हाट इज वर्थ कंजर्विंग, ठीक है, एंड इट डज नॉट कंजर्व्स व्हाट इज नॉट वर्थ कंजर्विंग। देन आफ्टर एफिशिएंसी नंबर टू कम्स इज योर पोटेंशियली वेरी सस्टेनेबल। जो पीछे हमने पॉलिसी फेलियर्स देखे थे कि जी गवर्नमेंट ने क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा कि जी आइदर आई कैन गिव यू सब्सिडी, आइदर अडॉप्शन हो सकती है या कुछ और आपको मैकेनिज्म, बट दोस वाज टोटल फेलियर्स। सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि देयर कैन बी पोटेंशियली वेरी सस्टेनेबल। व्हाट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन डोनर्स, इसमें कोई डोनर नहीं आया। द इंटरेस्टिंग थिंग इज वी हैवंट टॉक्ड अबाउट एनी डोनर, वी हैवंट टॉक्ड अबाउट एनी NGO, बट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सर्विस बेस्ड सर्विस यूजर्स एंड प्रोवाइडर्स। सिर्फ दो प्लेयर्स हैं मार्केट के, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सर्विस यूजर्स। उन दोनों ने ही ऐसा मैकेनिज्म यूज कर लिया है दैट योर एनवायरनमेंट इज बिकमिंग सस्टेनेबल, ठीक है। देन नीड फॉर वाटर वोंट गो अवे, क्योंकि अगर वाटर की हम बात करते हैं द नीड इज नेवर गोइंग टू, ये नहीं आप कह सकते कि हमने वाटर के प्राइस लगा दिए है सो नाउ दे हैव टू पे फॉर इट, दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग टू स्टॉप कंज्यूमिंग वाटर। द नीड फॉर वाटर इज नेवर गोइंग टू गो अवे, सो दैट कैन जनरेट indefinite payment stream. So automatically उसका कोई alternative भी नहीं है, so indefinite आपकी stream भी long term sustainable रखती है। Then what do you need to work upon this? For this work to be done, we need base payments to providers on payments by users. कि आपने users ने कोई base payments करनी है, किनको आपने providers को करनी है, ठीक। उसके बाद to actually deliver the सर्विसेज कि हम वाकई इन सर्विसेज को डिलीवर करें, हमें पहली बात जो करनी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। गेटिंग द साइंस राइट इज क्रिटिकल। We will be talking in the upcoming slides a lot about that how we can get the science right, लेकिन be very careful कि आपने इस साइंस को carefully आपने इसको मैनेज करना है। उसके बाद फिर टेलर मैकेनिज्म टू स्पेसिफाई लोकल कंडीशंस। हर एरिया की कंडीशंस क्या होंगी, डिफरेंट होती है, वहाँ पे यूजर्स फर्क होंगे, प्रोवाइडर्स फर्क होंगे, सोसाइटल कंडीशंस फर्क होंगी, कल्चर फर्क होगा, तो यू हैव टू टेलर दैट मैकेनिज्म। इफ यू रिमेंबर व्हाइल आई वाज रीडिंग द आउटलाइन कि हमने भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इसका पढ़ना है, दैट हाउ वी सेट अप दिस टाइम। सो इन शॉर्ट इफ आई जस्ट सम अप कि जी PES है क्या, तो आपके कुछ इन्वायरमेंटल सर्विसेज हैं। अब इन सर्विसेज को कुछ लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग उनको यूज कर रहे हैं। शुरू में क्या हो रहा था दैट द पीपल हु वर प्रोवाइडिंग इट और द यूजर्स वर यूजिंग दीज सर्विसेज बट they weren't paying for it, and that was actually abusing the nature. अब हमने क्या किया है that the providers when they provide these services to the users, तो users उसके in return क्या करते हैं, they are making payments to the providers. In this way जो पैसे आते हैं providers के पास, that is again invested in terms of making the nature more sustainable. So आपकी automatically built-in sustainability आपकी आ जाती है in your mechanism. Now students, I'm going to, as I said, I don't want to make it very boring, so what I'm doing is that I'm going to show you
a 15 minutes clip. Now this guy, he's basically from an Indian origin, Pavan Sukhdev, और यूरोप में एक प्रोजेक्ट आया टीब के नाम से. He will be talking all the details, but I'm just giving you an overview. And what they are doing is that actually, जिस तरह रॉबर्ट कोस्टेंजा ने इन्वायरमेंट की वैल्यू दी थी, तो इन्होंने इकोसिस्टम्स को डिफरेंट इकोनॉमिक वैल्यूज दी हैं, सो दैट वी नो दैट देयर व्हाट इज देयर इकोनॉमिक वैल्यू, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस. आफ्टर डूइंग दैट, what they do is that they are now looking into कि हमने अगर किसी asset की value कम है या ज़्यादा है, how it can help in the sustainability, and how private sector can contribute into it, how NGOs can contribute into it. So that is a very good talk. Now on the second part, which is not related to what he is saying, I always tell my students in the university that always go to TED, TED. And don't think that TED has given me any money that I am promoting them, but the speakers are amazing. You would see that how they talk, और उन्होंने 15 minutes के अंदर अपनी सारी presentation को wrap up करना होता है. So do visit this website. You can be a TED fellow and you will understand that how these speakers किस तरह अपनी presentations को crisp बनाते हैं, and these people are some big achievers. You can also apply for it, and you can also be a TED speaker. I'm also one of them, and you can understand that how this just listening to these speakers can make you a very good speaker, make you a very good presenter, and you can easily convey your ideas, complex ideas. So let's watch this video, and later on I'll come up with I'll tell you that what we'll be doing in the next lecture. Okay, I hope you enjoyed the video, and it talked a whole array of things that what we can do and what developing countries have potential in terms of these natural resources. In this next lecture, we will be wrapping up this payment for ecosystem services, and I'll be giving you, we covered the theory part, but I'll telling you some of the case studies and what kind of institutional framework we can develop for this particular ecosystem service. Till then, have a nice day and look forward to seeing you more. Thank you.